यू बाय डेफा न्यूज। मैं हूं जेमी ओल्टर और इस लाइव क्रिकेट पॉडकास्ट जैसे आप जानते हैं इसका नाम है कॉफी एंड क्रिकेट विथ जेमी। तो एक कप कॉफी, एक सिप कॉफी से शुरू करते हैं आज का लाइव स्ट्रीम। लवली डार्क हेजलनट रोस्ट। दोस्तों, आपके सवाल लेने से पहले मैं तीन चीजें कहूंगा कल के मैच के बारे में। सबसे पहली बात, यस, इंडिया हैव फाइनली मैनेज टू बीट द वेस्ट इंडीज इन अ T20I 2-0 डाउन। तीनों मैच जीतने के लिए इंडिया को बेहतरीन क्रिकेट खेलने की जरूरत थी। एक मैच में उन्होंने करी 7 विकेट से कल गयाना में मैच जीती। सूर्य कुमार यादव फाइनली शोइंग द वे दैट ही इज, वी लव हिम बैटिंग। और सबसे बड़ी बात कहूंगा मैं मैन ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव के बारे में, जिन्होंने 83 मारे, छक्कों की बौछार, बाउंड्रीज की बौछार। ही डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज द वे ही प्लेड। पिछले 2 मैच में वो फंस चुके थे। कल कंडीशन भी थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि हल्की फुल्की जो बारिश आई, इससे कहीं ना कहीं सूर्य की बैटिंग पे इंपैक्ट पड़ा। Because he said, you know what, I'm just going to bat the way that I've been batting in the IPL for India। ये नंबर 1 T20I रैंक बैट्समैन है और कल की पारी में सूर्य कुमार यादव दोस्तों उन्होंने दिखाया हमें कि व्हाट हिज वैल्यू इज इन दिस टीम। फैंटास्टिक शॉट मेकिंग। बात यह है कि उन्होंने अपना जो टेम्पलेट है, जिस टेम्पलेट से वो नंबर 1 रैंकिंग्स पहुंच चुके हैं, वहां से नहीं हटे। आते ही उन्होंने बाउंड्री हमारे वही शॉट्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं सूर्य कुमार यादव से। आई सेड बिफोर on these live streams that the amount of ODI cricket that Surya Kumar Yadav is being made to play, the kind of shuffling he's been doing, कभी 3, कभी 4, कभी 6, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ा था इनके T20 बैटिंग में। लेकिन कल बेहतरीन पारी सूर्य कुमार यादव से, एंड आई एम ग्लैड that it was him, the vice captain, batting in his best position। जैसे कि मैं कह चुका हूं बहुत बार आपके सामने इस लाइव स्ट्रीम पर, brought to you by Dafa News, the best place for Sky in this T20I team is number 3। I'm sure we're all very, very glad, very relieved, not just कि इंडिया मैच जीती फाइनली, बट सूर्य कुमार यादव की वो बैटिंग देखने को मिले जिसके लिए हम सब उन्हें प्यार करते, हम चाहते हैं नंबर 3 पे। दूसरी बात, तिलक वर्मा 3 मैचेस इन अ रो नाउ। 20 साल के रुकी डेब्यूटेंट प्लेयर, 39 not out, 59, and then he got 49 not out yesterday. He's showing early days, 3 ही मैच हुए, लेकिन इस लड़के का जो गेम है, का जो अप्रोच है, आई थिंक इट ऑगर्स वेरी वेरी वेल फॉर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ पूर्व खिलाड़ी, कुछ दिग्गज खिलाड़ी कह रहे हैं कि अब उन्हें ओडीआई वर्ल्ड कप में फास्ट ट्रैक करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अभी लड़का का जो चल रहा है फॉर्म T20 में, लेफ्ट हैंडर है, लेट्स नॉट रश हिम इन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो काबिल नहीं है, वो लायक नहीं है वनडे क्रिकेट के लिए। जरूर तिलक वर्मा बहुत साल तक तीनों फॉर्मेट में देश के लिए खेलेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ 3 T20Is वेयर ही स्टूड हेड एंड शोल्डर्स, तीनों मैच में अगर हम देखें, ही स्टूड हेड एंड शोल्डर्स ओवर द रेस्ट ऑफ द बैट्समैन, फार मोर सीरियस बैट्समैन। तो फिलहाल प्लीज लेट तिलक वर्मा बैट जहां पे वो बैटिंग कर रहे हैं। अभी उन्हें वनडे क्रिकेट ना खिलाएं। आयरलैंड जाएंगे, एशियन गेम्स जाएंगे। लेट्स कीप हिम इन माइंड फॉर नेक्स्ट ईयर्स T20 वर्ल्ड कप इन ही वेस्ट इंडीज कंडीशंस में। तीसरी बात दोस्तों, हार्दिक पांड्या। काफी क्रिटिकल रह चुका हूं मैं हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को लेकर। ही सीम काइंड ऑफ लॉस्ट, आई डोंट नो द रीजंस। कल दोस्तों उन्होंने ऐसा टेम्पलेट चुना जो पिछले 2 मैच में उन्होंने नहीं किया था। यानी कि दूसरे मैच आपको याद होगा, हार्दिक पांड्या ने अक्षर पटेल को गेंदबाजी ही नहीं कराई, गेंद नहीं दिया उनको। कल के मैच में ही स्टार्टेड हिम इन द पावर प्ले, ही ब्रॉट चहल इन द पावर प्ले, एंड आफ्टर 2 ओवर्स ऑफ पेस, अगले 8-9 ओवर तक लगातार हार्दिक पांड्या ने स्पिन 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 खिलाया। अब मैच के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा किया था क्योंकि मुझे मालूम था कि निकोलस पूरन बैटिंग करने आएंगे, लेकिन इट वाज अ बिट ऑफ अ रिस्की टेम्पलेट बिकॉज़ अक्षर पटेल्स फर्स्ट ओवर वेंट फॉर सम रन्स, चहल्स फर्स्ट ओवर वेंट फॉर सम रन्स। ओवरऑल अगर आप देखें, अक्षर पटेल को पहली बार इस सीरीज में 4 ओवर दिए हार्दिक पांड्या ने, एंड आई थिंक गिवन द फैक्ट दैट ही बिगैन इन द पावर प्ले, अक्षर पटेल ने कल अच्छी गेंदबाजी करी। बट 3 मैच 3 अलग टेम्पलेट हार्दिक पांड्या द्वारा। हो सके ये उनके रूप में एक्सपेरिमेंटिंग हो, बट आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि 2 मैच में आपने इतनी फेथ दिखाया मुकेश कुमार में। यू वांटेड टू बोल मत डेथ। कल के मैच में आप उन्हें तब बुलाने गए जब 18 ओवर शुरू होने वाला था। स्ट्रेंज, आई एम श्योर हार्दिक पांड्या इन हिज माइंड हैड सम क्लियर थॉट, परहैप्स टीम के मन में कुछ क्लियर थॉट्स थे। मैं थोड़ा कंफ्यूज था एक बार फिर से हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी लेकर, बट what really got to me was जब वो आए बैटिंग करने, उन्होंने तिलक वर्मा, एक सेट तिलक वर्मा को ये नसीहत दी कि तुझे नॉट आउट रहना पड़ेगा, तुझे गेम खत्म करना पड़ेगा, नॉट आउट से बहुत फर्क पड़ता है। ये हार्दिक पांड्या ने कल कहा था, हमने सुना था स्टंप माइक से।
उसके बाद गेम थोड़ा रुक गया था। इंडिया शुड हैव वन दैट मैच 2.5 ओवर्स बिफोर। हार्दिक पांड्या क्यों इतने धीमी तरीके से वहां खेल रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, डॉट बॉल खेल रहे थे। उन्होंने एक चौका लगाया था, इट वाज अ थिक कैच टू थर्ड मैन। उसके बाद जस्ट आफ्टर टेलिंग वर्मा वर्मा को वो तिलक वर्मा को वो नसीहत देने के बाद कि तुझे नॉट आउट रहना है, हार्दिक पांड्या ने एक अजीब गरीब शॉट मारा। मुझे लगा वो छक्के के की खोज में थे। द बॉल जस्ट स्पून टुवर्ड्स एक्स्ट्रा कवर। फिर जब तिलक वर्मा ने दूसरा रन लेने से इनकार किया तो हार्दिक पांड्या थोड़ा नाराज थे उनसे। आई डोंट नो व्हाट दीज वाइब्स इंडिकेट फ्रॉम हार्दिक पांड्या टू परहैप्स द फाइंड ऑफ द ईयर दिस ईयर। ऊपर से जब लड़का 49 नॉट आउट था और तुमने कहा उनसे कि भाई तुम नॉट आउट रहो, wouldn't a 53 or a 52 not out have been better? Hardik Pandya got the strike back and he finished the match with a six. I'm not saying कि उस 50 से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता टीम पे तिलक वर्मा से, but given the comments that Hardik Pandya made to Tilak Varma, the importance of finishing not out, भाई आप उन्हें 50 मारने देते। Anyways, overall, let's not get too critical. Hardik Pandya की टीम जीती। Overall, this was a much needed win from the Indian team. जैसे कि हम सब यहाँ पे बात कर चुके हैं इस लाइव स्ट्रीम पर कि काफी हमें से व्यूअर्स, मैं, आप थोड़े सरप्राइज थे कि इंडिया वेस्ट इंडीज से लगातार 2 मैच हारी। अभी भी 2 मैच बाकी हैं। अब जो है श्रृंखला शिफ्ट होगा फ्लोरिडा, America, and let's see whether Hardik Pandya and his teams can keep the good vibrations running from this win in Guyana in the third T20I. चलिए इसी बात पर आते हैं आपके कमेंट्स पर। नवजोत पाजी, अफ्रीकन रोस्ट नहीं नहीं, फिल्टर कॉफी देसी नहीं, दिस इज अ नाइस डार्क ब्रूड हेजलनट रोस्ट। इसी बात पर एक और सिप लेता हूं मैं। शिखर सिंह कह रहे हैं नेहा जी के बिना हार्दिक की कैप्टनसी ओके ओके है। बिल्कुल सही है, ओके ओके ही है। Iyer is out of the World Cup. Is Samson a guaranteed entry in the World Cup squad, or are we going to get another Vishankar? नहीं, we're not going to get anyone out of this pool. I know कि बहुत लोग कह रहे हैं, वसीम जाफर ने कल कहा था कि it's time to fast track Tilak Varma into the World Cup squad. I don't think so yet. Let his time come. अगर अय्यर नहीं खेलेंगे और अगर केएल राहुल कभी देखना है, अगर केएल राहुल नहीं आते हैं, फिर हो सके कि they go for someone like a Gaikwad who's at least played a bit of international cricket. सैमसन तो रहेंगे क्योंकि अगर केएल राहुल नहीं है, अगर अय्यर नहीं है तो आपको दूसरा कीपर तो जरूर चाहिए। Tame Impala, do you think Hardik should have come before Samson in the match to bat? No, I was surprised that they persisted with Samson. I would have thought, given the fact that आपने इतनी लंबी रस्सी दी संजू सैमसन को, you dropped Ishan Kishan for this match, or you rested him for this match, I would have wanted to see them perhaps try to get whatever minimum टैलेंट अभी बचा है संजू सैमसन के अंदर। यहां पे मैं सिर्फ T20 की बात कर रहा हूं, ओडीआई की नहीं। आई वुड हैव लाइक टू सी हिम बैक बिकॉज the match was won. You needed very few runs. Maybe Samson could come, hit a few boundaries, get a not out. Hardik Pandya ने कल नसीहत दी तिलक वर्मा को कि not out बहुत important रहता है. Why wouldn't you want to have a Sanju Samson 20 not out instead of Hardik Pandya? Strange. I would have gone for Samson. Hello, Crickmania. How are you? Guten Morgen. Few things that hurt in the last one. Arshdeep's bowling, Hardik being, yeah, again, Hardik Pandya, पता नहीं क्या हो गया उनको. His innings, again, 20 not out. It looks good, but that was a 20 which should have been maybe 9, 10 balls. He was defending balls. He just didn't look very confident. Then he's snapping at Tilak Varma. जब उन्होंने double इनकार किया, then he didn't let him get his 50. I don't know. I'm slightly concerned about Hardik Pandya's captaincy. SS98 इंडिया 11 मेजर कप, रोहित गिल, SS98 भाई तुम्हारा नाम क्या है मुझे अब तक नहीं पता, लेकिन तुम बहुत कंसिस्टेंट हो इस चैनल पर। थैंक यू। और दूसरी बात, जब भी आते हो अपनी टीम शेयर करते हो। आई लाइक दिस लाइन ऑफ थिंकिंग। रोहित गिल, विराट, तिलक, हार्दिक, स्काई, जडेजा, शार्दुल, कुलदीप, शामी, बुमराह। लेट्स होप फर्स्ट ऑफ ऑल that Bumrah gets in. Let's hope that Sky gets some runs. I'm still a bit critical about Sky at number 6. कल अच्छी बात है कि उन्होंने खुद माना कि हाँ मेरे ODI numbers बहुत खराब है, इसमें इसको एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है। आई एम अ लिटिल बिट डाउटफुल अबाउट स्काई एंड तिलक वर्मा अगेन SS98. आई डोंट नो वेदर वी नीड टू फास्ट ट्रैक हिम राइट नाउ। एस मैच कह रहे हैं कुछ सही नहीं है टीम इंडिया में बैक इन 2000 एरा। आई डोंट थिंक 2000 एरा वाली बात को मैं अग्री करूंगा, लेकिन हाँ जब से मैं कह रहा हूं बहुत टाइम से Indian cricket is broken from an administrative level. This is why you've seen this utter buffoonery, utter embarrassment over the World Cup. Selectors are apparently giving teams that captains aren't happy with. The coach and the captain, चाहे रोहित हो या हार्दिक हो, वहां कुछ जेल नहीं हो रही है. The test team is broken. The one-day team is still decent, but this T20 team it still needs a lot of work. So
सब कुछ खराब नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हैं इंडियन क्रिकेट में. सेल्फिश पंड्या, इट डिड सीम दैट वे, डिडंट इट सतीश? Ravi Shankar is back. I think Mukesh Kumar or Jaydev and Raghav will be playing Asia Cup. I think it's most likely Mukesh Kumar, Ravi Shankar, because if they did not see Mukesh Kumar as a possible option for the one-day tournaments, they wouldn't have played him in three T20Is. But Unadkat, if they were in the scheme of things, I think he would have played by now. So Mukesh Kumar, definitely, I get the feeling that Mukesh Kumar is being considered for the Asia Cup and the World Cup. They probably think that maybe Bumrah is not going to come back. But if they thought Unadkat was in the same boat, they would have played him. They've not played him yet. So in the white ball matches, in the one days, I mean. Tilak in Asia Cup, there's a chance. There's an outside chance. Yes, Vivek. परिचय सोनी साहब जुड़े. मुंबई फैंस भी लाइक, हाँ क्या बोला लास्ट टाइम मुंबई लॉबी. भाई देखिए, वो क्या कहें मुंबई लॉबी के बारे में भैया. बट लुक, तिलक वर्मा गॉट रन्स, सूर्यकुमार यादव गॉट रन्स. इनकी जोड़ी अच्छी है, इनकी जुगलबंदी अच्छी है. इट कम्स फ्रॉम द मुंबई इंडियन डेज. But yeah, tough to ignore that Mumbai lobby argument. In the last match, when we were struggling, Pandya sent Samson, and when we'd almost won his match, he came himself. Yep, I agree. It was strange. Navjot Pandya getting in a way, it was good that we were bowling first. Else, in the second half, it was raining, and Indian bowlers would have struggled. We know or have thought what's a good score and take target. I agree with you. Bilkul. Shikhar Singh, Ishan, Gill, Kohli, Rohit, Samson, Hardik, Jadeja, Kuldeep, Siraj. I'm the only 11 that should be given on these players so many chances. Ishan, you're talking about T20. One day, Rohit at four. No, Rohit Sharma should not bat at four. He'll really struggle. You've not picked Sky. I agree with that. Hardik, yes. Jadeja, Kuldeep, yes. That's a good 11, but I think you don't need Ishan Kishan and Samson. You don't need two keepers. You need to fix that and put Rohit back at opening. Crickmania, it's good that Shubman tasted failure. Bilkul, I agree. Look, I'm not going to go after Shubman Gill because he's failed in 5, 6 innings after a tremendous first half of the year, after tremendous IPL. दो तीन मैच से आप प्लेयर की टैलेंट पे इतने सवाल नहीं उठा सकते हो, क्योंकि वी ऑल नो कि लड़का 10-12 साल तक देश के लिए खेलेगा. हाँ, लेकिन चिंता की बात यह है कि उनका शॉट सिलेक्शन जो है वेस्ट इंडीज में, वो काफी खराब हो चुका है. जहां पे बॉल फंसती है, जहां पे बॉल रुक के आती है, उन टू पेस विकेट्स पर शुभमन गिल का गेम काफी एक्सपोज हो रहा है. But I still am not going to write him up. I think he'll be our opener for the World Cup. What if Prasidh Krishna performs well? Yeah, Rahul Nair, I would love to see Prasidh Krishna come back. I've been saying, if you watch my videos on this channel, मैं कब से कह रहा हूँ, इनका वापस आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े फास्ट बॉलर हैं. 140 डाल सकते हैं. अच्छी उनकी इंट्रोडक्शन रही 2021 में अंतरराष्ट्रीय टी20, बट आफ्टर दिस मैसिव सेटबैक, I don't know what the timeline is. I think he might be an outside chance for the Asia Cup if he does well in Ireland. But again, maybe too soon. I don't know. I'm not quite sure. आपकी हिंदी बहुत अच्छा है, थैंक यू. वर्ल्ड कप नंबर 4 तिलक पर आपकी क्या राय? मैं देखो, वो आगे बहुत साल तक खेल सकते हैं 4 पर, लेकिन अभी 3 बेहतरीन T20I परफॉर्मेंसेस के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको जल्दी डालो वनडे टीम में. फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं. SS19 is back. He's saying Rohit, Gill, Virat, Tilak, Hardik, Sky, Shardul, Kuldeep, Shami. If Bumrah's fit, absolutely. If Shami's fit, absolutely. आपने सिराज को नहीं डाला, शायद आप सिराज को वर्ल्ड कप के लिए रख रहे हैं, क्योंकि ये आपका 11 है फॉर एशिया कप. Tilak, again, I would love to see him back, but something, it's not about right wrong. It's just something doesn't feel like अभी उनको नंबर 4 पे चांस देना चाहिए. That's my thing. Sanju hit all runs. Jaiswal left at 98. Now Pandya Tilak. Damn you so-called established players. हाँ भाई, चित्ता की बात तो है. Do you think after this World Cup we'll have a look at different team altogether or ODI? Definitely the ODI team will change. Bilkul, you'll need to bring in new faces. Sky should not be pigeonholed at number 4 or 6. We have Jadeja, then ODIs. I agree with you. I agree. I agree. Sanju Samson should bat at 4. Again, T20I, he's not done anything of note. One days he has good numbers. Sky, I think the team is hell bent, Ashutosh, on playing him at 6. But if he doesn't improve his numbers like he acknowledged yesterday, it's going to be very, very tough. I assume he's going to bat at 6 throughout the Asia Cup. If he doesn't click in the Asia Cup, what do? Do you give him 3 more ODIs against Australia? Do you take a struggling, misfiring Sky into the World Cup? It's really bothering me, that number 6 position with Sky.
Either Samson and Ishan both play or Sky comes in one of them. सही बात है. If Rohit was captain, Ishan would have played and Sanju comes out. Yep, I would have to agree with you, Vivek. पर अच्छी बात है यार, टीम फाइनली एक मैच जीत गई. कुछ पॉजिटिव्स हमारे पास हैं बात करने के लिए. आई होप कि नाउ द सीरीज मूव्स टू फ्लोरिडा. वहां पे टीम इस प्रदर्शन को लेकर और भी आगे बढ़ पाएगी. सिलेक्शन को लेकर, टैक्स को लेकर थोड़ा मैं अभी भी सरप्राइज हूँ कि हार्दिक पांड्या ने पहले 2 मैच में चहल को चौथा ओवर दिया नहीं, अक्षर को एक मैच में बॉलिंग नहीं दिया. फिर उन दोनों को मुझे लगा थोड़ा जबरदस्त है, एज इफ ही हैड अ पॉइंट टू प्रूव टू हिज क्रिटिक्स कि ओ यू वांट मी टू बोल देम, हियर यू गो. सो ही गेव he bowled them out almost in like what 12 overs. Didn't go to Mukesh to the 18th over. I'm just getting mixed signals from Hardik Pandya's captaincy. What about Shreyas Iyengar's future? Well, he's in a race to be fit for the World Cup. I think back injury जो है मेरे दोस्त श्रीजन बहुत बहुत मुश्किल होता है to because the doubts creep in your mind. Should I field? Should I dive? Back injuries more than knee injuries can be very very crippling. Hats off to him for coming back almost to full fitness. लेकिन आई थिंक वर्ल्ड कप रेस के लिए वो मुश्किल है. वर्ल्ड कप के बाद तो जरूर वापस आएंगे because he has years on him. So he's a fantastic batsman. I'm a big fan of Shreyas Iyer. बताइए कोई और सवाल जवाब. हाँ, चहल को लेकर मुझे ये कहना था इससे पहले कि ये स्ट्रीम बंद करूं. यू ऑल नो कि मैं बहुत बार आपके सामने ये स्टैट्स ये सबूत रख चुका हूं कि वनडेज में कुलदीप को इतने चांसेस मिले, मोर देन डबल द चांसेस दैट चहल इज गॉट इन द लास्ट 15 months अंडर रोहित. सो ही इज क्लियरली इंडियाज नंबर 1 वाइट बॉल स्पिनर. और मुझे लगता नहीं है कि चहल वनडे वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे, लेकिन जहां T20Is की बात है वहां पे सिचुएशन रिवर्स है, फ्लिप कर सकते हैं हम. T20Is में Chahal has got a lot more playing time in the last 12 months and he's done really really well. But कल के मैच में जो कुलदीप वापस आए, मैं थोड़ा सरप्राइज था. I was surprised that they actually gave him a match because he's not been their number 1 T20I spinner under Hardik Pandya and Rohit Sharma. लेकिन कुलदीप ने आके 3 विकेट जो लिए हैं, is it time to perhaps think of giving Kuldeep more matches in T20Is? क्योंकि आई थिंक जहां पे हम टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, नाइंसाफी हुई है कुलदीप के साथ. और जब तक अश्विन, जडेजा, अक्षर है तो ये टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे. I think it's time to make Kuldeep a regular in the T20I team. Because yesterday he was the best spinner on view. चहल और कुलदीप वनडे एक साथ कभी नहीं खेलेंगे, मेरा ये मानना है. लेकिन ये कुलचा जोड़ी जो है, ये शायद अगले साल तक ये T20 वर्ल्ड कप में ये कर सकते हैं. This is my thoughts. You let me know what you all think. Should Ashwin play Asia Cup and ODI World Cup? Absolutely not, Ravi Shankar. What comment is this? Ashwin has not played a one day for 18, 19 months now. And you want a player who's not played a ODI for 19 months to play at the Asia Cup? Ravi Shankar? Absolutely not, my friend. क्या बात कर रहे हो? Why in India we compel players to play all 3 formats? I agree. You need to separate play. It's too much with these leagues going on. Yes, absolutely. I've done shows this year, last year, saying that do not force Gill to play T20s. It seems to be his weakest format. Now, that said, he did very, very well this year. He got 100. He's the owner of India's highest individual men's score in the format, 126. But I still think if you have to play him in one days, play him in tests. He's still not entirely convinced me as a T20I player. He's an all format player now. But I agree with you. I don't think we need to force him in T20s. Chalo, last couple of questions. Iyer is really unlucky with injuries. Got Delhi captaincy taken away. And now World Cup berth where he's the most dependable middle order batsman in India who knows how to play spin. Bilkul sahi kaha aapne. I agree with you. Fantastic player of spin and outstanding in one days. If Rohit was captain yesterday, Ishan would have. Yes, we had this. I think you already posted this comment, right? It's all about captain likings. Captain likings, captain faith, captain familiarity. कैप्टन के साथ कौन खेलता है आईपीएल में, ये सब फर्क पड़ता है दोस्त मेरी. चलिए दोस्तों, time to wrap this stream. I've got to go do some GST related work. My CA has been pinging me during the show saying कहाँ पे हो. Need to go check it out. Thank you all for joining the stream. Come back and see me tomorrow. You have a great Wednesday, great midweek. Love you all. Take care. Jai Hind.